The ultimate purpose of the sexual reproduction is to form the seeds and the fruits. And we have discussed this part of seed and fruit. There are different types in our Gulale series of morphology of flowering plants. So you can refer that link. Here we need to just remember a few examples over here. Always remember of endospermic, non-endospermic. Then there are three examples for perisperm containing seeds: black pepper, beet, and castor. Do you remember that? The seed dormancy is to be discussed in plant growth. Dormancy is a phase where the seed is viable but it's still not germinating. Viable मतलब अभी भी वो seed के अंदर fertile और germination की ability है, फिर भी external conditions की वजह से वो अभी तक germinate नहीं हो रहा। ऐसे seed को हम बोलते हैं viable seed. Oldest viable seed is Lupinus articus, which was excavated from the Arctic tundra and it germinated after 10,000 years. In the recent record, 2000-year-old seed of date palm phoenix was obtained during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. ये factual data हमको याद है. Fleshy fruits, dry fruits, false fruit, morphology of flowering plants में हमने cover किया हुआ. Now the last part of the topic, that is called apomixis. Apomixis. In general, apomixis means asexual reproduction. But यहाँ पे apomixis has a special meaning. It is asexual reproduction which mimics, copies sexual reproduction. In what? In formation of seeds. So apomixis is special type of asexual reproduction है जहाँ पे seed form होती है but there is no fertilization taking place. So it is development of seeds without the actual process of fertilization, which is called as apomixis. It is commonly found in grasses, the family Asteraceae, compositae, that is the sunflower family. अपोमिक्सिस का टाइप जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं अगैमोस्पर्मिक. और इसके होने के जो तरीके हैं, it occurs either by diplospory, apospory or adventive embryony, which is also called polyembryony. जैसे कि अगर एक मेगास्पोर मदर सेल वो मियोसिस नहीं अंडरगो की, it underwent mitosis and it will result in the formation of an embryo sac. Now this embryo sac is going to be diploid, and if this diploid embryo sac ka cell results in the formation of a embryo without fertilization, it will be called diplospory. Like this, you have a nucellus ka diploid cell, you have a nucellus ka diploid cell undergoing mitosis to produce a diploid megaspore, to produce a diploid embryo sac. और अगर ये डिप्लॉयड एग ने टोटीपोटेंसी की वजह से एम्ब्रियो बनाया तो एम्ब्रियो भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा. So in that case it will be called as diplospory. How the embryo sac develops? Either it could be from the nucellar cell or the integumental cell.
If it is from the nuclear cell, it will be called as apospore. If it is from the megaspore mother cell, it will be called as diplospore. सो ये अगर चार्ट में आपको समझाऊं, ये सीक्वेंस, तो ये ध्यान में रखिए, ये आपकी एम्ब्रियो सैक है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है वो नॉर्मली तो हैप्लॉइड होती है, लेकिन यहाँ पे उसके सारे सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि या तो मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक फॉर्म किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोस्पोर। या फिर न्यूसिलस या इंटीग्यूमेंट का सेल विदाउट माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक फॉर्म किया, जिसको हम कहेंगे अपोस्पोरी। सो ये दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होता है, जिसकी वजह से ये रिकरेंट है, बार बार एम्ब्रियो आ सकते हैं इसमें से। अब ये एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म हो? विदाउट मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लोस्पोरी. Without meiosis of the nuclear integument, it's called apospory. Adventive embryon, also called sporophytic budding, जहां पे आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसेलस के कुछ सेल्स प्रोट्रूड करते हैं और स्ट्रेट अवे क्या फॉर्म करते हैं? नए एम्ब्रियोस। तो हो सकता है आपके पास एक अंदर डिप्लॉइड जाइगोटिक एम्ब्रियो होगा, लेकिन 4 से 5 सोमैटिक एम्ब्रियोज भी होंगे, जो कहां से आए? न्यूसिलस से आए। सो एक साथ आपके पास 6 एम्ब्रियोज है, एक समझो जाइगोटिक है, बाकी 4 जो है वो सोमैटिक है, जो न्यूसिलस से आए हैं। इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग एडवेंटिव पॉलीमराइज। इट इज कॉमनली सीन इन मैंगो, सिट्रस एंड अपर्चिया। ओके, डज apomixis have any advantage? Yes, it ensures that वही पर्टिकुलर प्योर लाइन आगे कंटिन्यू हो, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। बट अपना जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स है, इसमें इसका यूज हो सकता है, बिकॉज अपो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ यू हैव हाइब्रिड वैरायटी ऑफ से XYZ plant and you grow it into your field, the future generations will show segregation. Some of them will show hybrid features, some of them will not show hybrid features. So you can't use that seeds to once again regrow the crop next year. आपको हमेशा हाइब्रिड्स कंपनी से ही खरीदनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल फार्मिंग वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगला जनरेशन में सेग्रीगेशन होगा। जरूरी नहीं है कि आपको उसके फ्यूचर जनरेशन सेम हाइब्रिड क्वालिटीज ही दिखाएंगे, तो हमेशा आपको हाइब्रिड किससे यूज करनी है? कंपनी से खरीद के। वही अगर हमने जो हाइब्रिड्स है उसको अगर अपोमिक्टिक कर दिया, लाइक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, we took the apomictic genes from say citrus or some other plant and transferred into our XYZ, then now this XYZ will not depend upon sexual reproduction. It will depend upon apomixis to produce new seeds. But now these new seeds will be exactly similar to the parent. So you don't have to, as a farmer, buy these hybrids again and again from the companies. You can use the traditional farming methods to continue. So production of hybrid seeds is costly, and hence the cost of hybrid seeds becomes too expensive for the farmers. The farmers cannot collect the seeds from the hybrids because the plants in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid characters. So if we make these hybrids apomictic, there is no need of with the if we make the plant seeds, these hybrid seeds apomictic, I'm reading from the NCERT text, there is no segregation of characters. The farmer can keep on using the hybrid seeds again and again to raise a new crop without having the need of buying the hybrid seed again and again. ऐसा ओके क्या आपने हाइब्रिड वैरायटी बनाई है ऐसी, जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स अच्छे वाले हैं, साथ साथ आपने एक अपोमिक्टिक जीन भी डाल दी। अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा क्या? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, डेफिनेटली क्या करेगा?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड्स बनाएगा, हाँ बनाएगा। तो क्या फार्मर उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूज कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या उसको बार बार ये अभी हाइब्रिड की सीड्स किसी और से खरीदनी पड़ेगी? नहीं, वरना नॉर्मली खरीदनी पड़ती है। आपने हाइब्रिड खरीदा, उसकी सीड सो किया, तो सेग्रीगेशन दिखेगा आप ऐसे। So apomictic can be brought to good use to elevate the farmers from their sufferings. So that is why NCRT says that active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer the apomictic genes into hybrid varieties. So this brings us to an end of this important topic for NEET.